Hello students, I am your English teacher and today we are going to start chapter 4 in our grammar portion of class 8 and the chapter name is the correct use of adjectives. So students, we have already learned some basic uses of adjectives in the chapter parts of speech, and in this chapter we will see some more useful examples and degrees of comparisons in adjective. Adjectives are words that describe or modify another person or thing in the sentence. The articles a and the are adjectives also. You can see this table degrees of comparison. How we compare things with each other. Now students, we have some rules also to use degrees in sentences. We will see in this chapter. And these degrees we have also learned in the previous class also. You can see this table: positive degree, comparative degree and superlative degree. Now see positive degree: as good as tall as big as, and in comparative degree better than, the better of the two. हम दो लोगों के बीच में या दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं. टॉलर देन or the taller of the two, bigger than or the bigger of the two, and last one is superlative degree. It means the most, the best of all. It means सब में best, the tallest of all, the biggest of all. Now the comparative degree, rule 1. You have to remember all the rules. सी रूल 1. इन कंपेयरिंग टू थिंग्स, यहाँ पे हम दो चीज़ों की कंपैरिजन की बात कर रहे हैं. द कंपैरेटिव नॉट द सुपरलेटिव शुड बी यूज्ड. जब दो चीज़ों की कंपैरिजन होती है तब कंपैरेटिव डिग्री यूज होती है, ना ही के सुपरलेटिव. लुक द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स. फर्स्ट, ही इज द टॉलर ऑफ द टू, नॉट द टॉलेस्ट. सेकेंड, विच इज द बेटर ऑफ द टू, नॉट द बेस्ट. रूल 2. द फॉलोइंग वर्ड्स आर यूज्ड एज कंपेरेटिव्स. नीचे यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हुए वो एज ए कंपेरेटिव्स यूज होते हैं, बट टेक विथ देम टू इंस्टेड ऑफ देन. यहाँ पे हम जो कंपेरिजन कर रहे हैं वहाँ पे देन की जगह हम टू यूज करेंगे. वी नेवर यूज मोर विथ दीज वर्ड्स. Students, we cannot use more with the following words. Look, first example. He is junior or senior to me in age. Second, this cloth is superior or inferior to that. Third, health is preferable to wealth. Third, health is more preferable to wealth. You can see the last example is incorrect because we cannot use more with these words. Rule 3. Double comparatives and superlatives should not be used. यहाँ पे डबल कंपेरेटिव्स और डबल सुपरलेटिव्स यूज नहीं हो सकते हैं. Look the following example. He is more cleverer than his brother. It is incorrect sentence, but the right one is he is cleverer than his brother because we have already used than for comparison. Second, she is the most youngest in the family. It is incorrect sentence, and the right one is she is the youngest in the family. The second sentence is of superlative degree. Now see rule 4. The following error is very common and should be avoided. And now when we compare two things, this kind of mistake should be avoided. Look the following examples. First, our army is more powerful than Pakistan. Here we have to use that of, and the first sentence is incorrect. Look the right one. Our army is more powerful than that of Pakistan. And second one is the population of Mumbai is greater than Delhi. But the right sentence is the population of Mumbai is greater than that of Delhi. And note that the comparison is not between our army and Pakistan.
but between our army and the army of Pakistan. Similarly, the comparison is not between the population of Mumbai and Delhi, but between the population of Mumbai and the population of Delhi. स्टूडेंट्स कंपैरेटिव डिग्री में हम देन यूज करते हैं, बट वी विल नॉट यूज देन इन द सुपरलेटिव डिग्री. सी रूल 5 ऑफ द सुपरलेटिव डिग्री. द सुपरलेटिव डिग्रीज टेक्स द बिफोर इट. सुपरलेटिव डिग्री में जब भी जो सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड होता है उसके पहले हम द आर्टिकल यूज करते हैं. लुक द फॉलोइंग एग्जांपल्स. दिस प्लान इज द बेस्ट ऑफ ऑल, यानी कि सब में बेस्ट. सेकेंड, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन अवर क्लास. अगर कोई भी वर्ड का सुपरलेटिव नहीं हो सकता, दैट मीन्स उसके पहले हम द मोस्ट यूज करेंगे. बट द इज नॉट यूज्ड व्हेन, लेकिन कुछ चीज़ों के अंदर, कुछ सेंटेंसेस के अंदर द यूज नहीं होता. विल सी हियर द सुपरलेटिव हैज अ पॉजेसिव केस बिफोर इट. अगर द सुपरलेटिव के पहले पॉजेसिव केस होता है तो हम द यूज नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, मुकेश इज माई बेस्ट फ्रेंड. माई इज पॉजेसिव केस. सेकेंड, इट वॉज हर मोस्ट फुलिश एक्ट. हर इज पॉजेसिव केस. सेकेंड, द सुपरलेटिव इज यूज्ड विथ अ नाउन टू एड्रेस समवन. किसी को एड्रेस करने के लिए हम नाउन के साथ सुपरलेटिव यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ओ काइंडेस्ट मदर, हाउ आई मिस यू. Second, oh dearest son, when will you be back? In this both the sentence mother and son, both the words are noun. Rule 6. An adjective having one of before it, अगर कोई भी एडजेक्टिव से पहले वन ऑफ होता है, शुड बी यूज्ड इन द सुपरलेटिव, तो वो सुपरलेटिव डिग्री में ही होता है. लुक द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स. ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज ऑफ अवर स्कूल. सेकेंड, शी इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल्स ऑफ अवर टाउन. दिस बोथ द सेंटेंसेज आर ऑफ सुपरलेटिव डिग्री. रूल 7. व्हेन वन थिंग इज कंपेयर्ड विथ एवरी अदर थिंग ऑफ द सेम काइंड, we must use any other after the positive or comparative degree. जब भी कोई एक चीज बाकी दूसरी सारी चीजों से कंपेयर होती है, तब हम पॉजिटिव और कंपेरेटिव डिग्री के बाद एनी अदर यूज करते हैं. बट अदर इज नेवर यूज्ड आफ्टर द सुपरलेटिव डिग्री. जैसे मैंने आपको पहले बताया, सिर्फ पॉजिटिव और कंपेरेटिव डिग्री में ही हमें उसके बाद एनी अदर यूज करना है, ना ही कि सुपरलेटिव डिग्री में. लुक द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स. फर्स्ट, कपिल इज एज गुड एज एनी अदर प्लेयर. सेकेंड, कपिल इज बेटर देन एनी अदर प्लेयर. थर्ड, Kapil is the best of all players. And last, Kapil is the best of all other players. That is incorrect sentence, because we cannot use other in the superlative degree. Fourth one, Misha is as intelligent as any other girl. Fifth, Misha is more intelligent than any other girl. Sixth, Misha is the most intelligent of all girls. And the last one is Misha is the most intelligent of all other girls. That is incorrect sentence. Rule 8. The superlative must not be used to mean very plus positive degree. सुपरलेटिव वेरी प्लस पॉजिटिव डिग्री में यूज नहीं हो सकता. लुक द फॉलोइंग एग्जांपल्स. फर्स्ट, अनूप इज अ बेस्ट फ्रेंड. हियर द वर्ड बेस्ट इंडिकेट्स सुपरलेटिव, सो दैट इज इनकरेक्ट सेंटेंस. एंड द राइट वन इज अनूप इज अ वेरी गुड फ्रेंड. इट इज राइट. सेकेंड, ही wrote a best book. Here the word best indicates superlative, so it is incorrect sentence. And second, he wrote a very good book, so that is right sentence. Rule 9. If the first of two or more adjectives is a superlative, the other should also be superlatives.
जब फर्स्ट टू एडजेक्टिव्स या उससे ज़्यादा एडजेक्टिव सुपरलेटिव में होते हैं तो बाकी सारे भी सुपरलेटिव्स में होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ द बेस्ट एंड पॉपुलर टीचर ऑफ अवर स्कूल. दैट इज इनकरेक्ट सेंटेंस. But the right one is, he is the best and most popular teacher of our school. Here the word best and most, both the words indicate superlative degrees. Second one, this is the best and cheap book on grammar. That is incorrect sentence. And the right one is, this is the best and cheapest book on grammar. Now the use of elder, eldest, older, oldest, later, latest, last and later. Rule 10. Elder and eldest are used for person and for the members of the same family. Here both the words elder and eldest are used for persons and for the members of the same family. एक ही family के members या persons के लिए ये दोनों ही words use होते हैं. Older and oldest are used for things as well as persons. This both the words can be used for things as well as persons. Elder is not followed by then. Older is followed by then. You have to remember this both the rule. Elder is not followed by then, but older is followed by then. Look following examples. He is older than me. यानी कि वो मुझसे बड़ा है. Second, he is my elder brother. We cannot use older. Third, his eldest son is a doctor, not oldest. Fourth, our school is older than yours, not elder. Fifth, it is the oldest temple in our city, not eldest. Sixth, he is the oldest player in our team, not eldest. You have to remember the difference between both these words. Rule 11. Now later and latest are used to show time. ये दोनों ही words time indicate करने के लिए use होते हैं. Later and last are used to show position. और later and last दोनों ही words position show करने के लिए use होते हैं. First, what is the latest news? Not last. यहाँ पे करंट न्यूज़ की बात हो रही है. सेकेंड, द लास्ट बैट्समैन प्लेड वेरी वेल, नॉट लेटेस्ट. थर्ड, आई रीच्ड द स्कूल लेटर देन श्याम, नॉट लेटर. फोर्थ, अनु एंड रेनू आर टू सिस्टर्स. द लेटर इज माई फ्रेंड, नॉट लेटर. स्टूडेंट्स, वी कैन चेंज वन डिग्री इन अनदर ऑल्सो. सी इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन. रूल 12. When a thing is to be compared with another of the same kind, we can use the positive or comparative degree. जब कोई भी एक चीज़ सेम काइंड की दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर होती है तब हम पॉजिटिव या कंपेरेटिव डिग्री यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ एज डल एज एन एज, पॉजिटिव. Both the word as and as shows positive degree, and in comparative degree we will use then. Look the following example. And as is not duller than him. Second, she is not as wise as her sister. This is positive degree. And her sister is wiser than her. This is comparative degree. So an affirmation sentence in positive degree becomes a negative sentence in comparative degree. पॉजिटिव डिग्री में affirmative sentence, comparative डिग्री में negative sentence बन जाता है. एंड अ नेगेटिव सेंटेंस इन पॉजिटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री में नेगेटिव सेंटेंस becomes an affirmative sentence in comparative degree. Now see rule 13. When one thing is to be compared with many of the same kind. जब कोई भी एक चीज़ सेम काइंड की बहुत सारी चीज़ों के साथ कंपेयर होती है, वी कैन यूज़ एनी डिग्री. हम कोई भी डिग्री यूज़ कर सकते हैं, पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव. Look the following examples. The Himalayas are the highest of all mountains. This is superlative degree because we have used highest and the also, so it is superlative degree. Second, in comparative degree we will use then. The Himalayas are higher than any other mountain. It is comparative sentence.
And last one is no other mountain is as high as the Himalayas. Here both the word as shows positive degree. Second, Pandit Nehru was the most popular Indian leader. It is superlative degree. Second, Pandit Nehru was more popular than any other Indian leader. And the last one is positive degree. No other Indian leader was as popular as Pandit Nehru. You have to remember some rules or some words for all the degrees. For superlative, the and most or est at the end of any word, and in comparative, then, and in positive, as and as. Third, Ashoka was one of the greatest of Indian rulers. It is superlative degree. Ashoka was greater than most other Indian rulers. Comparative degree, and very few Indian rulers were as great as Ashoka. It is positive degree. Fourth, Kolkata is one of the largest seaports of India. Superlative degree. Kolkata is larger than most other seaports of India. You can see ER after word large. Very few seaports of India are as large as Kolkata. It is positive degree. स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने सेम सेंटेंस के सुपरलेटिव, कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री के सारे सेंटेंसेस देखे. कीप इन माइंड द फॉलोइंग टेबल फॉर द चेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में चेंजेस के लिए हमें इतनी चीजें याद रखनी है. सुपरलेटिव द बेस्ट और वन ऑफ द बेस्ट. कंपैरेटिव बेटर देन एनी अदर और बेटर देन मोस्ट अदर्स. Positive degree no other and as good as, and very few and as good as. Students, try to solve some more examples of degrees from your textbook. Here our chapter is completed. I hope you understand it well. Revise it once again. Thank you.